इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अप्रोच टू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एंड cost यूज एंड कॉस्ट ऑफ द रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या करता है? डिटेल एनालिसिस ऑफ यूज एंड कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज of an organization. The main resources are man, money, material, equipment, and machinery. An industrial engineer carries out such analysis in order to achieve the objective and policies of an organization. The production management deals with the design of control and the design of production system, जैसे कि clouds product, process plant और equipment, and development of control system to manage inventories, product quality, production schedule and productivity. Work study. The work study consists of two techniques, namely method study and work measurement. The pioneer work in the field was done by F.W. Taylor and Gilbert. वर्क स्टडी के क्षेत्र में काम किसने किया था? टेलर और गिलबर्ट ने। मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी इज ए टेक्निक टू सिंप्लीफाई द जॉब एंड डेवलप more economical method of doing it. The work measurement is concerned with the elimination of ineffective time and establishment of time standard for the job. देखो भाई, वर्क स्टडी दो काम करता है वर्क मेजरमेंट। एक तो एलिमिनेशन करता है इनफेक्टिव टाइम का, दूसरा इस्टेब्लिश टाइम स्टैंडर्ड, इस्टेब्लिश ऑफ टाइम स्टैंडर्ड, मतलब खुद इस्टेब्लिश करता है टाइम स्टैंडर्ड फॉर द जॉब। एलिमिनेशन कैसे करता है? द टाइम ड्यूरिंग विच बिना प्रोडक्टिव काम को हटा देता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। बाई मेथड स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग यूनिट, टू मेंटेन परफॉर्मेंस एट हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग एनी गिवन टाइम एंड कंटिन्यूसली टू इम्प्रूव ऑन दैट लेवल। क्या ऑब्जेक्टिव है मेथड स्टडी का? टू इम्प्रूव द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट, इम्प्रूव टोटल परफॉर्मेंस, ठीक है। टू मेंटेन परफॉर्मेंस, देखो भाई पहले तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करो और फिर उसको मेंटेन रखो। ये काम कौन करता है? मेथड स्टडी। द मेथड स्टडी कैन अप्लाइड टू ऑलमोस्ट all type of work, whether it is factory, clerical or any other activity. फैक्ट्री क्लरिकल और कुछ भी हो सकता है भैया ना। द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है भाई? पहले तो सिलेक्ट द जॉब प्रोसेस टू स्टडी, फिर रिकॉर्ड ऑल फैक्ट, सारे फैक्ट को रिकॉर्ड करो अबाउट द प्रेजेंट मेथड बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फिर उसको एग्जामाइन करो, एग्जामाइन दिस फैक्ट क्रिटिकली, डेवलप द मोस्ट प्रैक्टिकल इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव मेथड, इंस्टॉल द न्यू डेवलप्ड मेथड एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, मेंटेन द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बाय रेगुलर रूटीन चेक। तो मेथड स्टडी के कितने पॉइंट हो गए? पहले सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन। सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, देन डेवलप के बाद में इंस्टॉल के बाद में मेंटेन द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। Symbol used in work study. The symbol used in work study. The work study is done by means of stopwatch. In work study, all the activity are broken down into 5 basic type of event and each represented by symbol. सबसे पहला था ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? इट इन्वॉल्व चेंज इन द लोकेशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। ऑपरेशन क्या होता है? चेंज इन द लोकेशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आता है इंस्पेक्शन। इट इज एन एक्ट ऑफ चेकिंग फॉर करेक्टनेस ऑफ द क्वांटिटी और क्वालिटी। चेकिंग द करेक्टनेस किसमें आता है? इंस्पेक्शन में आता है। फिर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एरो जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है। स्क्वायर क्या होता है? इंस्पेक्शन। एरो ट्रांसपोर्ट होता है। इट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। डिले, डी फॉर डिले, it occurs when something stop the process and product wait for next event। और लास्ट में आता है स्टोरेज, उल्टा त्रिभुज।
Storage, it represents stage when a finished good or raw material waits an action, or when an item has been retained for quite some time for reference purpose. नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डायग्राम. स्ट्रिंग डायग्राम में क्या होता है? द स्ट्रिंग डायग्राम इज यूज्ड फॉर चेकिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस लेआउट. स्ट्रिंग डायग्राम तो चेकिंग करता है रिलेटिव वैल्यू फॉर वेरियस लेआउट. दूसरा काम होता है स्ट्रिंग डायग्राम का वेयर ग्रुप ऑफ वर्कर आर वर्किंग एट ए प्लेस वेयर प्रोसेस रिक्वायर द ऑपरेटर टू बी मूव फ्रॉम वन वर्क प्लेस टू अदर. तो किस किस के लिए काम करता है? चेकिंग. स्ट्रिंग डायग्राम चेकिंग वैल्यूज, group of workers and process required. Work measurement. The work measurement is the application of technique to establish the time for a qualified worker to carry out a specified work at a defined level of performance. The objective of work measurement are follow: to plan and schedule of production, to formulate a proper incentive scheme, and to estimate the selling price and delivery date. वर्क मेजरमेंट क्या करता है? प्लान, फॉर्मुलेट ए प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करता है वर्क मेजरमेंट. फॉर्मुलेट प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम एंड टू एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस एंड डिलीवरी डेट. द प्रिंसिपल टेक्निक वर्क सिस्टम मेजरमेंट में जो टेक्निक यूज करते हैं तो टाइम स्टडी. दूसरा पीएमटीएस. पीएमटीएस क्या होता है? प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम. थर्ड है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग और फोर्थ आता है एक्टिविटी और एक्टिविटी सैम्पलिंग. सबसे पहले देखते हैं टाइम स्टडी. द जनरल प्रोसीजर फॉलोड इन सिस्टमेटिक कैरिंग आउट द टाइम स्टडी एज फॉलो. सेलेक्ट. इसमें भी टाइम स्टडी में भी क्या होता है? सेलेक्ट द वर्क टू बी एग्जामिन. सेलेक्ट द वर्क टू बी एग्जामिन. फिर होता है रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन. रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑपरेटर एंड सराउंडिंग कंडीशन. फिर आता है ब्रेक डाउन द ईच ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट. फिर ब्रेक डाउन ईच ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट. देन एग्जामिन ईच एलिमेंट to ensure that most effective method and motion are used. फिर एग्जामिन करने के बाद में क्या होता है? मेजर विथ स्टॉप वॉच द टाइम टेकन बाय ऑपरेटर टू परफॉर्म ईच एलिमेंट. देन असेस द इफेक्टिव स्पीड ऑफ द ऑपरेटर. स्पीड को असेस करेंगे ऑपरेटर परफॉर्मेंस. अप्लाई रेटिंग फैक्टर. अप्लाई रेटिंग फैक्टर टू द ऑब्जर्व टाइम to get basic or normal time. Then determine the allowance to be made. Determine the allowances. नंबर 9 पे आता है compile standard time. Compile standard time. Note: the standard time or allowed time is the total time in which a job should be completed at standard performance. It is obtained by adding all allowances to the basic time or normal time. The average time recorded by work. Average time recorded by a work study man for an operation is called representative time. The actual time read from stopwatch during time study is known as observed time. The assessment of performance of operator by time study known as rating factor. Predetermined motion time system. PMTS क्या होता है? It is work measurement technique. PMTS भी क्या है? Work measurement technique होती है to build up time for manual work making use of predetermined elemental motion time. The following few method. MTM में क्या होता है? तो method MTM method time measurement MTM, work factor system, basic motion time study BMTS और motion time analysis MTA. Micro motion study. Micro motion study क्या होता है? In the micro motion study was
originated from Gilbert. Micromotion study किसने दी थी? Gilbert ने दी थी. The study is based on the idea of the dividing human activity into division of movement. Dividing human activity into division of movement known as therblic. Known as therblic. It is the name. Therblic क्या होता है? It is the name given to micromotion of an operation. The study consists of analyzing a motion picture taken during the performance of work. The time taken for each fundamental motion is accurately indicated in the film by timing device. The purpose of micromotion study is. Purpose क्या होता है भाई इसका? The purpose of micromotion study is to assist in finding out of most efficient way to doing work. It also train the individual operator regarding the motion economy principle and help in collecting the motion time data for synthetic time standard. Break-even analysis. Break-even analysis consists of total cost जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आता है टोटल कॉस्ट में, एंड सेल, टोटल कॉस्ट एंड सेल रेवेन्यू. The fixed cost do not increase or decrease with the sales or production, such as rent, insurance, salaries, etc. The variable cost increases. The variable cost increases or decreases with the sales or production, such as raw material, direct labor, indirect material, etc. The point at which a business neither makes profit nor incurs loss is known as break-even point. It is a point when sales revenue and total cost line are intersect. Sales revenue and total cost line are intersect. अब वेजेज इंसेंटिव प्लान क्या होता है? फॉलोइंग वेरियस वेजेज इंसेंटिव प्लान अलग अलग होते हैं. वेजेज इंसेंटिव प्लान सबसे पहले देखते हैं स्टेट पीस वर्क सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वर्कर इज पेड एट ए स्पेसिफाइड पीस रेट फॉर द नंबर ऑफ pieces for or unit produced by him. The standard output is set and the worker is guaranteed a minimum wage. Thus, if a worker produces less than the standard output, he will get the minimum guarantee wage. If another worker produces more than standard output, he paid wages in direct proportion the number of pieces. In this system, फिर आता है दूसरा आता है हेस्ले प्लान. In this system, a standard time is set from past production record for the completion of job. The worker guarantee minimum wage. If a worker completes the job in the standard time or more than the standard time, he paid his guarantee at this time. If worker complete the job in less than time standard, he paid a bonus मिलेगा भाई अगर कम टाइम में करेगा तो. In addition to his base wage at the guaranteed, the amount of bonus varies from 30 to 50% of the time saved. If R is base rate, अगर R क्या है? base rate है guaranteed per hour. R base rate है, S is the standard time for the job and T is the actual time. Then according to Hesley 50-50 plan, next आता है रावण प्लान. In this system, an hourly rate guaranteed. Standard time for the completion
the job established from the past production record. If the job is completed in the standard or more than the standard time, the worker paid guarantee wages. If the job completed less than, फिर इसको भी bonus मिलेगा. According to Ravan plan, the total earning of the worker or wages. रावण प्लान के अकॉर्डिंग देती गई है. Jant, फिर आता Jant. In this system, output is standard for a given time set by the careful scientific study of the work. If worker reaches the standard task level, अगर worker standard task level पे reach करता है, he paid a bonus which is usually 1/3 of the task rate. If the worker fails to reach the set standard, he paid only guaranteed wages. Immersion efficiency plan. In this system, standard time is established for each job. During each pay period, the number of hours taken by each worker to complete the job is recorded. The efficiency of each worker is calculated, which is given as the ratio of standard time for the job to the time taken by worker. The worker is guaranteed his time rate. The work standard is set at high level. If the efficiency 66 से ही 2/3% or below, then the worker is paid his guaranteed wage. Worker is paid guaranteed wage and no bonus is paid at 67% efficiency. The worker is paid this time rate plus a small bonus. The bonus increases with the increase in efficiency. The term used in network planning method. Event is a specific instant of time which makes the start and end of an activity. The event consumes neither time nor resources. It is represented by circle and the event number is written within the circle. Activity. Every project consists of a number of job, operation or tasks which are called activity. An activity is shown by arrow and begin and event. In event, an activity consumes the time and resources. Activity consume time and resources. An activity may be performed by individual or group of individual. कैसे perform हो सकती है? The activity may be classified as critical activity, non-critical activity and dummy activity. 3 टाइप से बता सकते हैं आप, critical, non-critical and dummy. The activity is called critical if it is earliest time EST plus the time taken by it. EST में क्या जोड़ोगे? The time taken by it is equal to the latest finish time LFT. EST plus LFT. And critical activity क्या होता है? Is marked either by thick arrow or by 2 line as shown. A non-critical activity has provision. Non-critical activity में क्या होता है? Float and slack, so that even if they consume a specified time over and above the estimate time, the project will not be delayed. When 2 activities start at same instant of time, the head event are joined by dotted arrow, and this is known as dummy activity. The dummy activity does not consume time and resource. Critical path. It is the sequence of activities we decide the total project duration. It is found by critical activity. The critical path consumes maximum resources. It is the longest path and consumes maximum time. A critical path has zero float or slack. Slack or float. The slack is with reference to an event and float is with respect to an activity.
देखो select reference to an event and float is with activity. float काम करता है activity पे और select काम करता है event पे. in other words select is used with part. select यूज करता है part में and float is used in CPM. select काम आता है part में और float काम आता है CPM में. but in general practice they may be used interchangeably. The select represents the difference between the earliest completion or finish time and the latest allowable time. Select earliest completion or finish time and the latest allowable time. The select may be select by positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, zero भी हो सकता है. select when the select of an activity is positive. select positive होता है तो it represents a situation where extra resources are available. मतलब extra resources available है भाई. and the completion of the project is not delayed. delay नहीं होगा भाई. select negative है then represent that a program falls behind schedule. Program falls behind schedule and additional resources are required to complete the project in time. Select an activity is zero. अगर zero है then the activity is critical. Activity is critical and any delay in performance will delay the completion of whole project. फिर आता है part. The program evaluation review technique part is a project planning and control technique. It is an event oriented technique. It provides part क्या है भाई event oriented है. It provides an approach to keeping planning up to date. मतलब planning up to date रखने के लिए part काम करता है. It provides a way for management to require planning to be done uniform and logical basis. It permits management to foresee quickly impact of variation from plan. The program evaluation action review technique is applied for long range planning, installation of machinery, research and development, marketing program, advertisement program. The part analysis based upon three time estimate. पहला था optimistic time. It is the shortest possible time. Optimistic time क्या होता है? Shortest possible time in which activity can completed if everything goes exceptionally well. Most likely time, it is the time which activity is normally expected to complete under normal contingencies. Pessimistic, it is time which activity will take to complete in case of difficulty. TM क्या था? T naught plus TP plus 4 TM बटे 6. Critical path method. CPM क्या होता है? Critical path method. Critical path method CPM was first used by Morgan ने यूज किया था. Morgan R. Walker in 1957. It helps ascertaining time schedule make better and detailed planning possible. Encourages discipline and provides a standard method for communicating project plan, schedule and to time and cost preference. Next आता है organization. The organization is a group of people. Organization क्या? Group of people which works under an executive leadership. It divides the work and responsibility of employee. It establishes relationship between authority and responsibility under control effort groups. The organization is a step towards the achievement of established good goals. The following are the various type of organization. पहला था line organization. It is also called military type organization because it resembles to olden military organization. Sometimes it is also called scalar type
इसके लिए टाइप भी बोलते हैं इसको. Since it has straight flow of authority within a single unit, it is the simplest form of organization in which responsibility of each individual. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस बाय प्रैक्टिकली all advantage both line and functional organization. In line and staff organization, the quality of work improved and there is less wastage material, man and machine. The expert advice from specialist staff executive can made use of this type of organization is preferred for an automobile industry. Line staff and functional organization. This type of organization has many of the advantage. Line and staff and functional organization. This type of organization preferred for steel industry. स्टील इंडस्ट्री में तीनों आती है, लाइन, स्टाफ, फंक्शनल. जबकि लाइन स्टाफ किस में आता है? ऑटोमोबाइल में. और फंक्शनल किस में आता है? मॉडर्न और एडवांस कंसर्न. अब आता है इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक कंट्रोल आर फॉलो. To have good stock control system, to have good stock control system, to have technical responsibility for the state of material, to run the store effectively. In inventory control, the economic order quantity is obtained by quantity whose procurement cost is equal to inventory carrying cost. Procurement cost equals to inventory carrying cost. If A is the total item consumed, तो EOQ क्या होता है? EOQ बराबर EOQ क्या होता है? EOQ टू डी सी नॉट बटे सी एच अंडर रूट में. प्लांट लेआउट क्या होता है? द प्लांट लेआउट इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ building, machinery, equipment, workplaces and other facilities of production in order to process the product in most efficient manner. According to मुथर के अनुसार the basic principle of best layout are integration, minimum movement, material handling, smooth condition flow, safe environment and flexibility. The three type of plant layout. प्लांट लेआउट की तीन टाइप होती है. प्रोसेस लेआउट सबसे पहले आता है. प्रोसेस लेआउट इज आल्सो नोन एज फंक्शनल लेआउट और एनालिटिकल लेआउट. दिस टाइप लेआउट एम्प्लॉयड वेयर. अब भाई प्रोसेस लेआउट कहाँ काम करता है? लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. एक तो वॉल्यूम कम हो. सिमिलर जॉब आर मैन्युफैक्चर्ड. मशीन आर अरेंज इन फंक्शनल बेसिस. जब काम करता है प्रोसेस लेआउट. प्रोसेस लेआउट हैज द फॉलोइंग. ड्रॉबैक क्या है इसका? मोर फ्लोर स्पेस. भाई इसमें फ्लोर स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए. प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली होता है प्रोसेस लेआउट में. ठीक है. रूटिंग एंड शेड्यूलिंग इज मोर डिफिकल्ट. ये भी प्रोसेस में ही होता है. हैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल इज टू मच. भाई खूब सारी तो हैंडलिंग है, खूब सारा बैक ट्रैकिंग. प्रोडक्ट लेआउट. द प्रोडक्ट लेआउट इज आल्सो नोन एज synthetic layout. This type of layout is best suited where one type of product is produced and the product is standard. भी होना चाहिए. It is used for mass production
mass production of product. The product layout lowers overall manufacturing time. Require less space for placing machine and utilizing machine and labor better. In order in product layout especially and strict supervision strict मामला चाहिए भाई. प्रोडक्ट लेआउट में स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एंड मशीन कैन नॉट बी यूज देयर मैक्सिमम कैपेसिटी. मशीन जो होती है ना उसको आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज नहीं कर सकते भाई. कैन नॉट बी यूज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी. द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइजेज विथ फॉल इन द वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम कम आप करोगे ना प्रोडक्ट लेआउट में तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी. द प्रोडक्ट लेआउट इज सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा आता है? प्रोडक्ट लेआउट. फिर एक थर्ड आता है आपके फिक्स्ड पोजीशन लेआउट. द फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट. इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द प्रोडक्ट इज सो लार्ज and it cannot be moved from one location to another location, but tool, material and labor are moved to product for perform specific operation. This type of layout is used for manufacturing ship, aeroplane, steam turbine. इसमें फिक्स्ड पोजीशन मतलब प्रोडक्ट की पोजीशन फिक्स रहती है, लेबर घूमती रहो इधर उधर. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग. शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग. रूटिंग क्या होता है? रूटिंग इज वाइटल पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल. It lay down the flow work in the plant. Routing determine how and where the work is to be done. वाह भाई वाह. रूटिंग बताएगी, क्या बताएगी? हाउ एंड वेयर इज द वर्क इज डन. वाट मशीन, कौन सी मशीन आर टू बी यूज. देखो भाई रूटिंग क्या बताता है भाई, काम कहाँ करेंगे और कैसे होगा, मशीन कौन सी यूज होगी. एंड इट प्रिस्क्राइब द पाथ एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड. और कैसा पाथ होगा, क्या सीक्वेंस होगा ऑपरेशन का, ये सब कौन बताएगा? रूटिंग. दिस प्रोवाइड ए basis for routing provides basis for scheduling, dispatching and control function. ये बेस है. रूटिंग क्या है? बेस है भाई शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग का. फिर नेक्स्ट आता है आपके शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग में क्या होता है? इट में आल्सो कॉल्ड टाइम फेज ऑफ लोडिंग. शेड्यूलिंग क्या होता है? टाइम फेज ऑफ लोडिंग. द लोडिंग मीन्स द असाइनमेंट ऑफ वर्क टू फैसिलिटी. जैसे असाइनमेंट किस के लिए? मैन के लिए, मशीन के लिए, ग्रुप ऑफ मैन के लिए, ग्रुप ऑफ मशीन के लिए. वेयर शेड्यूलिंग इंक्लूड in addition the specification of time and sequence in the work is to be done. Rather dispatching is the most important activity of the production planning and control. It is defined as the physical release of work authorization to operating facility in accordance with previously established plan developed by routing and scheduling function. Next are the linear programming. Linear programming is one of the classical operation research technique. Classical technique of linear programming. It is defined as the mathematical technique for finding the best use of limited resource of company in the maximum manner. भाई ये मैथमेटिकल टेक्निक है और लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देता है. इट कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बैंक, सब में काम करता है ये लीनियर प्रोग्रामिंग. केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बैंक, सब में काम करता है. द सिंप्लेक्स प्रोसीजर is an excellent technique for solving linear programming problem.